Hello everyone. Good afternoon all of you. तो समस्ते ज्वाइन कर जाओ जल्दी जल्दी. Then we will start our class. Okay? समस्ते ठीक है जल्दी जल्दी ज्वाइन कर जाओ पिला मने. तो समस्त का पाई आज रा फर्स्ट क्वेश्चन. Good afternoon. Good afternoon. Assertion reasoning rachi assertion the ultimate goal of education is the holistic development of the individual to fit into and actively improve society. Reason hochi focusing exclusively on vocational training is sufficient to create a self-reliant democratic citizens who contributes to national development. कोटा हबो पिला माने. Good afternoon everyone. समस्त आंसर दियो कोटा हबो. प्रणाम प्रणाम. Very good, very good.
समस्ते पिला माने टिके सेशन को शेयर करो एवं समस्ते जल्दी जल्दी जॉइन हो जाओ, बहुत डिले करछो। तो आंसर हबो सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। पिला माने आंसर हबो तमरा सी, राइट आंसर हबो, ए हबो नाही। समस्ते ए आंसर देइछो बट आंसर हबो सी। कोन देइछि ना, द अल्टीमेट गोल ऑफ एजुकेशन इज द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू फिट इनटू एंड एक्टिवली इंप्रूव सोसाइटी। से कहिसंती गोटे छुआर संपूर्ण विकास हेई परिबो सेते बेले होलिस्टिक डेवलपमेंट जेते बेले से फिट हेई परिबो इंडिविजुअलिटी एवं एक्टिवली इंप्रूव करि परिबो सोसाइटी को। एटा होची होलिस्टिक डेवलपमेंट रो मेन एम, अल्टीमेट गोल। माने हमें सोसाइटी पई, हमें समाज पई, हम देश पई जहा गोटे दबा। ओके, देन असला focusing exclusively on vocational training is sufficient to create a self-reliant democratic citizen who contributes to national development। तो एटा तारो परफेक्ट एग्जांपल नुहे। ओके, नेक्स्ट 2 नंबर, अकॉर्डिंग टू जॉन डी, एजुकेशन इज नॉट ए प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल गोल्स बेस्ट अलाइन्स विथ दिस pragmatic philosophy? जॉन डी कहिसंती जो एजुकेशन दा प्रिपरेशन फॉर लाइफ नुह बट लाइफ इटसेल्फ ही एजुकेशन। तो एई भितर चारटा ऑप्शन नु कोटा एजुकेशनल गोल्स बेस्ट अलाइन होची तांकर से जो pragmatic philosophy सहित। ओके, आंसर दियो समझते 2 नंबर। वेरी गुड। ऑप्शन सी कौन ना, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू द कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमारा एक्सपीरियंस बा अनुभूति रो कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन करिबा प्रोसेस को हमें कौन कहूचे ना, जॉन डूइंग अनुसार एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ बट लाइफ इटसेल्फ। एटा होउची एजुकेशनल गोल्स जोटा के अलाइन होउची pragmatic philosophy सहित। ओके, next 3rd number, in the context of a democratic society the most critical socio-political aim of education is to foster very good, option D, critical thinking, tolerance and active participation in civic। then कौन, from the perspective of Bloom's taxonomy, हमारा टीचिंग रे ब्लूम टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव टा बहुत गुरुत्वपूर्ण। of educational objectives which of the following represents the higher order cognitive goal of a learner? कोटा higher order cognitive goal learner रा represent करूची ना, evaluating the ethical implication and effectiveness of say newly proposed educational policy। option B, applying a learned mathematical formula to solve a routine structured problem। C, explaining the fundamental principle of inclusive education in one's own words। D, recalling the exact definitions of various learning theories। कोटा गुड मॉर्निंग सीमा। From the perspective of Bloom's taxonomy of educational objective, which of the following represents the higher order cognitive goal of a learner? Higher order cognitive goal कोटा? पिला माने एठी क्रिएटिंग नाही, जदि क्रिएटिंग नाही, क्रिएटिंग तळकु कोटा अछि, क्रिएटिंग तळकु अछि इवैल्युएटिंग नाही कि एक्सप्लेनिंग। ब्लूम टैक्सोनॉमी रे तमे जो ऑप्शन सी कहउछ एक्सप्लेनिंग जिंसटा तांका टैक्सोनॉमी रे नाही, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रे इवैल्युएटिंग अछि, इवैल्युएटिंग ऊपरटा होछि क्रिएटिंग। जेहेतु एठी हमकु कोठी क्रिएटिंग जिंसटा देइनी ताहले एठी जोटा क्रिएटिंग रो तळ पोजीशन को थिबो सेटा ही होछि हायर ऑर्डर थिंकिंग। बुझा से जिनसटा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी रो जो ऑब्जेक्टिव अछि 6टा ऑब्जेक्टिव, से 6टा ऑब्जेक्टिव रु एनालिसिस अप्लाइंग ए जो जिंस गुडा अछि। देन 5 नंबर रे अछि इवैल्युएटिंग, 6 नंबर पोजीशन ने अछि कॉग्निटिव लेवल कथा पचेरछि, गोटे कॉग्निटिव, गोटे अफेक्टिव, गोटे साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव लेवल ले 5 नंबर जोटा अछि सेटा होछि इवैल्युएटिंग। ओके, नेक्स्ट
Now, the shift from teacher-centric to learner-centric education primarily changes the goal of teaching from facilitating knowledge construction to transmitting authoritative information. B. Transmitting a fixed body of knowledge to facilitating independent learning and critical inquiry. Summative evaluation of students to continuous behavioral conditioning. Promoting collaborative group work to encouraging intense individual competition. Kota haba? आंसर दिया 5 नंबर कोड आवा प्रणाम गुड आफ्टरनून वेरी गुड तो से कहला जो टीचर सेंट्रिक रु लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन को आसिला तार गोल टीचिंग फ्रॉम कौन ना ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ट्रांसमिटिंग ए फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज टू फैसिलिटेटिंग इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड क्रिटिकल इनक्वारी से कौन कहला ना टीचर सेंट्रिक आमे कौन जानछे गोटे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड माने कौन सेटा लेक्चर सेंटर मेथड माने केवल टीचर लेक्चर मेथड रे छुआ मानन को पढेबे टीचर जहा पढेबे छुआ माने सेटा बुझिबा पई बाउंड बा से माने बाध्य से जिंसडा पढिबा पई किंतु कौन हैला ना टीचर सेंटर रे जते बेले लर्नर सेंटर आसिले आमे क्लासरूम रे डिस्कशन करिचे कौन ना लर्नर सेंटर रे लर्नर मानकर नीड्स लर्नर मानकर इंटरेस्ट लर्नर मानकर एबिलिटी लर्नर मानकर कैपेबिलिटी को देखि कि आमे कोन करूचे ना आमे पढिया पई चेष्टा करूचे तो गोटे फिक्स्ड बॉडी ऑफ नॉलेज केवल नॉलेज ट्रांसमिशन न करके नॉलेज कौन करूचे आमे फैसिलिटेट करूचे क्रिटिकल इनक्वारी पई छुआटा निजे जेमिति बुझू निजे लर्निंग बाय डूइंग मेथड रे पढू करू सेही सब जिंस पई हमें ताको एनकरेज करूचे ओके 6 नंबर assertion और रीजनिंग अछि ए ना एस्टैब्लिशिंग प्रेडिक्टेबल रूटीन्स एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज लेटर ऑन से कहिछि गोटे प्रेडिक्टेबल रूटीन जोटा हमें बनौछे फास्ट रे धर तमे बीएड एग्जाम पई प्रिपेयर होउछो किबा इंटीग्रेटेड बीएड पई प्रिपेयर होउछो तमे फास्ट गोटे रूटीन बनौछो सेटा तुमको सिग्निफिकेंटली बा गुरुत्वपूर्ण भाबरे कोन रिड्यूस करूछि ना क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज एज ए टीचर क्लासरूम रे जदी कोनोसी मैनेजमेंट इश्यूज आसुछि तम रूटीन टा तम सिस्टमैटिक प्रोसीजर तमर रूल तमर रेगुलेशन तुमको हेल्पफुल होउछि ओके ओके Next asla are routines automate everyday transition thereby reducing the cognitive load of the students and minimizing unstructured time where off-task behavior typically occur. Choose the correct option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Now A is false but R is true. A is true but R is false. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. 6 number right answer होउची ऑप्शन ए both A and R are true and R is the correct explanation of A. B केमती हबो A is false केमती establishing predictable routines at the very beginning of the academic year significantly reduces classroom management issues later on. निहाती भाबरे जदी मु किछि गोटे प्लान करि नथिबी आमे काहेकि एटा फॉल्स केमिति हबो एटा ट्रू ही हबो काहेकि ट्रू हबो बुझो ना जेते बेले आज ए टीचर तमे गोटे सिस्टमैटिक प्लानिंग करि देथिबो लर्निंग ऑब्जेक्टिव फिक्स करि दैछो तमे सेही लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेही प्रोसीजर हिसाब रे काम करूछो ताले कोन हबो तमन जो क्लासरूम मैनेजमेंट इश्यूज आसुची से इश्यूज गुडा को तमे इजीली सॉल्व करि परिबो तमरो कोनोसी प्रॉब्लम आसीबोनी बैरियर आसीबोनी तो मैनेजमेंट इश्यूज टा दूरीभूत हेई परिबो देन कहची रूटीन्स ऑटोमेट एवरीडे ट्रांजिशन thereby reducing the cognitive load on students and minimizing unstructured time where off-task behaviors typically occur. तो से कहिछि रूटीन्स ऑटोमेट जो गुडा को होउछि एवरीडे ट्रांजिशन सेटा ऑटोमेट हे जाउछि एवरीडे रे जहा भी जिंस हमें करूछे एटा रिड्यूस करूछि कॉग्निटिव लोड ऑन स्टूडेंट्स
तो स्टूडेंट मानक ऊपर जो कॉग्निटिव लोड क्रैमिंग मेथड थिले ताकू रिड्यूस करूची एंड मिनिमाइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड टाइम वेयर ऑफ टैक्स बिहेवियर टिपिकली ऑकर। तो जो मैनेजमेंट टाइम रो प्रॉब्लम होउथला अनस्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल थिला जदी हमें फिक्स करूने जो जिनसटा प्रॉब्लम होउथला ई जो फिक्स टाइम टेबल फिक्स रूटीन द्वारा कोन होउची ना जो ऑफ टैक्स बिहेवियर बा डिस्ट्रप्टेड बिहेवियर से जिनस गुडा रिड्यूस हेई पारुची। ओके नेक्स्ट देखो 7 नंबर ना ए टीचर कंसिस्टेंटली नोटिस दैट ए स्पेसिफिक स्टूडेंट एग्जिस्टिव destructive behavior whenever the class transition to independent math practice according to the principle of functional behavior assessment FBA. What should be the teacher's primary initial focus? Teacher primary initial focus कौन? A. Okay, very good. Now identifying the ascendants that trigger the behavior and the underlying purpose of the behaviors are for the student. तो identify करिवो जो trigger करिवो गोटे छुआर behavior एवं underlying behaviors are the student. Okay. Next 8 number question. Now which of the following scenarios best demonstrate the concept of negative reinforcement in a classroom setting? तो हमारा दुई प्रकार reinforcement अछि पॉजिटिव एंड नेगेटिव ए भितर पढ़ एवं कुह एवं यदि किछि न बुझी परछ पचरा कोटा नेगेटिव reinforcement को बुझौछि। सी ओके समस्त आंसर दबा को चेष्टा करा और समस्त पार्टिसिपेट करो सो दैट समस्त पार्टिसिपेशन रेट टा बढ़िबो। सी हबो ना ए हबो से पचार which of the following scenario best demonstrate the concept of negative reinforcement in a classroom setting? ए कहला a teacher expand the class from the weekend homework assignment because they completed all their in class project collaboratively and quietly. Then a teacher verbally reprimands a student in front of the class for failing to bring their textbook. एटा तो हबनी समस्त आगे ता केभे भी गाली करबनी. That does not mean negative reinforcement, but a teacher takes away 5 minutes of recess time because a student was talking during lecture. से टेक्स आवे नै जबा 5 मिनिट्स आहुरी लेक्चर टाइम रे नउथला बोली तमे को हिसाब रे एटा दोच सी हबो बोली केमिति जदी छुआटे क्लासरूम रे गप्पुची ताले तमे कोन करबो सीए काहे कि गप्पिला मु मो क्लास को हरि 5 मिनिट नेबी तम माने जो दिन मो टाइम टा खाई दउछ किए मते सोदी की किए मते यात्रा करी की कोन करी दउछ मु सेहि दिन कोन गोटे रु 4टा जाई क्लास नउची कि तम माने पनिशमेंट देबी ना काली सकाळे तमे हुओ कि मु हुए मु काली सकाळे लेक्चर हुए कि टीचर हुए कि तमे हुओ तमे जाई कि कहारो टाइम नै बहबनी. A teacher gives a student a sticker for scoring full marks on weekly spelling test. एटा तो नुहा ऑप्शन ए ही हबो जोडरा माने a teacher expand the class from the weekend homework assignment because they completed all their in class project collaboratively and quietly. जो जिनसटा छुआंकर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होउछि से जिनसटा जदी वीकेंड रो होमवर्क से क्लासरूम रे छुआ मानन को प्रोवाइड करूछंती ताले समस्त से जिनसटा को कोलैबोरेटली करिवे एवं क्वाइटली करिवे एंड हियर नेगेटिव डज नॉट मीन हमें छुआ को पनिशमेंट दबा
नेगेटिव रेनफोर्समेंट माने पनिशमेंट नुह नेगेटिव रेनफोर्समेंट माने जो गुडाक छुआर डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर से डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को आमे को वे रे करेक्ट करि पारुछे दैट इज नेगेटिव रेनफोर्समेंट पॉजिटिव रेनफोर्समेंट ने जोटा तार गुड बिहेवियर से गुड को आमे आहुरे गुड केमिति करि पारुछे दुईटा जिंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव डज नॉट मीन्स कि कोन ना इट reduces the behavior but it increases the positive behavior among the students. Next asla कौन ना teacher adopts a classroom management style where students are involved in creating the classroom rules at the start of the year. The teacher provides choices within limits and explain the reasons behind disciplinary actions. Which management style does this represent? Permissive, authoritative, authoritarian, laissez-faire. प्रणाम श्रावणी कौन हम पिले 9 नंबर जेतेबेले टीचर adopts classroom management style where students are involved in creating the classroom rules at the start of the year, the teacher provides choices within limits and explain the reasons behind disciplinary actions. Which management style? Very good. Authoritative. अलगा गुडा का कौन laissez-faire management माने कौन what do you mean by laissez-faire management system? मु laissez-faire माने तुमको पचारछि आग तमे कहि सार तापरे मु बुझेइबी laissez-faire management माने कौन what do you mean by laissez-faire management system? जो थिरे कि आमे कौन करबा एम्प्लॉय एठी एम्प्लॉय तो नुह टीचर स्टूडेंट तो टीचर कौन करंती ना गोटे लिमिटेड रेस्ट्रिक्शन सहित माने लिमिटेड किस रेस्ट्रिक्शन नुह लिमिटेशन रखि थांदी कि एई बाउंड्रीज रु हमको बाहर को जिबार नाही किंतु ता भीतर रहि कि तम माने कौन पढ़ा पई चॉइस करबो तमे कौन करि परबो स्टूडेंट इंटरेस्ट रे से माने समानगर कौन डेवलपमेंट करि परिबे तांको पूरा फ्री हैंड प्रोवाइड करा जाई थाए ओके let them do and allow to do. Very good Chandan. Next ba now 10 number from a constructivist perspective on learning the ultimate goal of classroom management should be transition students from teacher directed compliance to student self regulation and autonomy, collaborative work to highly competitive individual tasks, formative assessment frameworks to strict summative evaluation protocols, intrinsic motivation to reliance on extrinsic reward system. कोटा हबो ये स्वागत सरी गलानी पिले याठू स्पीड तो मु करि परिबिनी आ जहार करंट नाही तो तमे परे देखि दबो जेतिकी हेई पारुची सेतिकी देखो काहे ना धीरे धीरे मु जिबा पसंद करे मते गाई चरी गला भलिया पाठ पढेबा पसंद न कि स्पीड स्पीड एबीसीडी कहि दे कि जिबा काहे ना मे बी तमको आसुची सब छुआ को आस्थुबो बोली माने नाही यस ऑप्शन ए टीचर डायरेक्टेड कंप्लियंस टू स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेशन. नेक्स्ट 11 नंबर when designing the physical layout of a classroom to promote an inclusive and constructivist learning environment, a teacher should prioritize ताले से जगह रे teacher कौन prioritize देबे. Okay. Now creating static learning centers that remain unchanged throughout the academic year to ensure routine. Now traditional roles facing the teacher to minimize peer-to-peer distraction. See,
Flexible sitting arrangements that can be easily modified for both independent work and collaborative group tasks. Then placing all students with learning disabilities in a separate cluster near the teacher's desks for constant monitoring. कोटा पिले very good. Option C, na flexible sitting arrangement that can be easily modifiable for both independent work and collaborative group tasks. तो आमर sitting arrangement आमे एमिदी सिस्टम रे करितबा जेतेबेले आमे चाहुतबा धर आमे चाहुचे गोटे राउंड शेप रो क्लासरूम करिया पई करि परिबा यू शेप रो करिया को चाहुचे करि परिबा आमे सीधा सीधा पिला को रो वाइज बसेबा को चाहुचे रो वाइज बसेई परिबा तो सेही सब जिंस को नै कि आमे पिला मानन को पढेबा ओके Next asla kono in the context of behavior modification techniques the process of extinction is best applied when a student is exhibiting misbehavior primarily for the purpose of kon pai पूर्णिमा B.Ed एग्जाम रे केमिति टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन आसीबो सेटा ऑलरेडी हमरो पीआई के डिस्कशन गोटे क्लास रे 4 घंटा रो हेई सरीची जे तुम देखिनो पीआई को और पीआई रो सॉल्यूशन जाय के देखि दियो तो डाउट क्लियर हे जबो कि लेवल ऑफ क्वेश्चन हमरो केमिति आसुची सी कौन कहलानी भल से भाभी के आंसर दियो In the context of behavior modification technique, the process of extinction is best applied when a student is exhibiting misbehavior primarily for the purpose of छुआटा misbehavior से टाइम रे काहे की करी थाए acquiring a tangible item they have been denied मारी दिबो टीचिंग एप्टीट्यूड थ्योरी प्लस एमसीक्यू तुमको आसी जिवो सुमित्रा वाईटी रे आडा 247 ने ऑलरेडी गुटे वीक आगुरु 8-10 दिन आगुरु 8 दिन आगुरु हे सरीची सेशन तमे पाई पर वेरी गुड कोन ना गेनिंग अटेंशन फ्रॉम द टीचर और पीयर्स से जो बिहेवियर टा करंती काहे की मिसबिहेव करंती ना तांकर पीयर्स ग्रुप एवं टीचर का थारु अटेंशन गेन करिया भाई ओके नेक्स्ट देखो कोन 13 नंबर द पिग्मालियन इफेक्ट relates to classroom management primarily through the concept that students will naturally form hierarchical peer groups that influence overall classroom discipline. Now option B, a teacher's explicit rules are less effective than the implicit physical arrangement of the classroom. Now option C, a teacher's conscious and subconscious expectation of a student's behavior can actually influence and shape that student's actual behavior. D, punishment is a more rapid modifier of behavior than positive reinforcement in high stress environment. Option C, that a teacher's conscious and subconscious expectation of a student's behavior can actually influence and shape that student's actual behavior. तो छुआर टीचर्स रा कॉन्शियस बिहेवियर हो बा सबकॉन्शियस एक्सपेक्टेशन हो स्टूडेंट बिहेवियर ऊपर कैन एक्चुअली इन्फ्लुएंस आउ सेव करे कोन ना स्टूडेंट रा एक्चुअल बिहेवियर टाकू नेक्स्ट आसला कोन ना स्वयं ऑपरेट्स ऑन 3 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन पॉलिसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम असेस अकाउंटेबिलिटी इक्विटी क्वालिटी स्वयं जो प्लेटफॉर्म अच्छी सेटा गोटे कार्डिनल प्रिंसिपल ऊपर बिलीव करे तो ए भितर को प्रिंसिपल टा सेटा नुहे ऑप्शन बी यस अकाउंटेबिलिटी ता भितरे नाही नेक्स्ट जेबा
Now, in the context of Swayam Prabha, which satellite is used for the telecast of educational channel? EduSat, na GSat 15, na INSAT 3C, na GSat 30. कोटा यूज होता है ना इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्वयं प्रभा व्हिच सैटेलाइट इज यूज्ड फॉर द टेलीकास्ट ऑफ एजुकेशनल चैनल. ऑप्शन बी ना जीसैट 15 द्वारा 24/7 स्वयं प्रभा रे डीटीएच चैनल चली थाए. ओके, नेक्स्ट गला कौन assertion reasoning. Swayam is a one stop shop for online courses from class 9 to post graduation. Reason goes it provides a 4-quadrant approach including video lectures, especially prepared reading material, self-assessment test and an online discussion forum. Quote haba 16 number. Very good. Option A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Next asila, as of 2024-26, how many DTH channels are currently operational under the Swayam Prabha project? तो स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट अंडर रे वर्तमान 2026 सुधा केतोटी चैनल काम करूची जोटा कि 24/7 बा 24 घंटा हमको कौन प्रोवाइड करूची? रिसोर्स प्रोवाइड करूची. ऑप्शन सी 17 नंबर ना 40 टे डीटीएच चैनल अछि. आगुरु केतटा थिला 32 आउ नाही चेंज हे सारलानी. एबे 40 डीटीएच चैनल हे सारलानी. करंट होउची 40 डीटीएच चैनल. आगुरु थिला तमरो. The NCF 2005 was primarily based on which educational philosophy? Behaviorism, constructivism, na essentialism, na perennialism. तो आमर जो national curriculum framework 2005 अछि सेटा बेस्ड होउची को एजुकेशनल फिलोसफी ऊपर. ऑप्शन बी ना कंस्ट्रक्टिविज्म. 19 नंबर. According to NCFC 2023, the school structure has shifted from 10+2 to 5+3 plus 3 plus 4. What does that 5 represent? Na primary stage class 1 to 5, na foundational stage 3 years preschool plus class 1 to, na early childhood stage is 5 to 10, na preparatory stage class 1 to 5. Option B na foundational stage 3 years of preschool and class 1 and 2. Next ila, which of the following is a key recommendation of NCFC 2023 regarding board examination for secondary student? Na board exam should be held once a year to reduce stress. छुआ मानकर stress reduce करिया पई board exam वर्ष को गोटे थर हबो. ना board exam should be eliminated and replaced by internal school grading. एटा eliminate हे जबे मम replaced हे जबा. ना student be allowed to take board exam at least twice a year. ना दिथर से माने board exam दबा दरकार. ना कौन student board exam should focus strictly on high stakes factual recall. कोटा हबो पिले 20 नंबर. Very good. Option C. Students should be allowed to take board exams at least twice a year. Next, NCF 2005 suggests that main goal of mathematics education in school is to improve numerical skill, not to teach algebra and geometry for competitive exams, not to mathematize the child's thought process, not to solve word problems related to daily life. कौन हवा? 21 नंबर. डी मु तो कहबे 21 नंबर से कहितला चाइल्ड रा थॉट प्रोसेस को मैथमेटाइज करबा. बलसे टिके चेक करबा डी हबो नाही जोडा पॉजिटिव लागुची सेटा कर दोउछा. लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 वाज बेस्ट रिपोर्ट फॉर व्हिच फ्रेमवर्क? NCF 2000, NCF 2023, NEP 2020, NCF 2005. वेरी गुड. NCF 2015 एटा किए कहिदिले प्रोफेसर यशपाल. ओके
Next, 23 number, which type of assessment is primarily used to identify a student's specific learning difficulties and misconception during instructional process? Summative assessment, prognostic assessment, placement assessment na diagnostic assessment. कोटा हबो पिले? Diagnostic assessment. Next. Now, in a criterion reference test, the performance of a student compared with the national average score for that specific age group, now the performance of other student in the class, now a clearly defined set of learning objective na कौन? Option C, a clearly defined set of learning standard or goal or objective. Okay, criterion reference कहिछि. Next असला कौन? Now, which of the following best describe the assessment for learning approach? Standardized testing conducted by external agencies. Now, conducting an end of term examination to certify student. Now, providing grades and ranks to motivate competitive behavior. Now, using feedback to adjust teaching and learning while it is happening. कोटा हबो पिले 25 नंबर. Very good. Option D, using feedback to adjust teaching and learning while it is happening. Next, देखो. Now, teacher noticed that a test develop yields consistent result every time it is administered, but it does not measure the actual skill intended. Which test is? को test हबो? रिलायबल बट नॉट वैलिड. एटा होची रिलायबल बट वैलिड नुहे काहे ना कंसिस्टेंसी रिजल्ट दोची बट जोटा मेजर करबा को चाहूची सेटा मेजर करि पारु नाही. व्हाट वी इंटेंडेड टू मेजर एटा होची हमर वैलिडिटी एंड कंसिस्टेंसी सेटा होची हमर रिलायबिलिटी. नेक्स्ट आसला कोन? व्हिच टूल ऑफ इवैल्यूएशन इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर असेसिंग ए स्टूडेंट्स सोशल स्किल एंड बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग? रेटिंग स्केल, observation, aptitude test na achievement test. कोटा हबो? Option B, observation. Next, now what is the main objective of continuous comprehensive evaluation CC? To evaluate all aspects of a child's development continuously. Now, to increase the frequency of formal examination. Now, to help teachers complete the syllabus faster. Now, to assess only the scholastic aspect of a student. कोटा हबो 28 number? Now, option A, to evaluate all aspects of child's development continuously. Next, 29. Now, which type of evaluation is conducted at the end of a course to certify or to grade a student's achievement? को प्रकार test? Formative, summative, diagnostic and placement evaluation. एटा हमें entry behavior जानिया पाई करू. एटा हमें learning difficulties जानिया पाई करू. एटा end term बा certify करिया को करू. तो एटा हबो answer. फॉर्मेटिव है हमारा ऑनगोइंग बट ड्यूरिंग द प्रोसेस. ओके, तो ठीक अच्छे देखा बा पुणी कौन ना वेडनेसडे सेशन ने आई थिंक एठी ही क्वेश्चन सरी छी. यस, तो आमे वेडनेसडे देखा बा किछि न्यू क्वेश्चंस किबा थ्योरी को नेकी बट मो भाबुची वेडनेसडे आमे क्वेश्चंस आनी माने आमे थ्योरी आनीबा कोन ना ऑल द लर्निंग थ्योरीज रिलेटेड टू योर बीएड एग्जाम. तम बीएड एग्जाम रिलेटेड जहा जहा लर्निंग थ्योरीज गुडा रिलेटेड अछि जेमति कि मु कहितली बिहेवियरिस्टिक थ्योरी स्किनर हेले पावलोव हेले हमर थंडाइक हेले तारे कॉग्निटिव रे कंस्ट्रक्टिविज्म रे पियाजेट हेले वाइगोत्स्की हेले
ब्रुनर जो स्पाइरल करिकुलम से सब विषय डिस्कशन करबा ता सहित इनसाइटफुल लर्निंग कौन कोलर कर तो ये सब जिनस आउ इंटेलिजेंस थ्योरी किए कौन कहिथिले से सब जिनस थ्योरी टिके डिस्कशन करिया थ्योरी डज नॉट मीन पूरा हमें थ्योरी डिस्कशन करबा बट शॉर्ट रे हमें डिस्कशन करबा जेमिति कि थ्योरी टा कांसेप्ट मैप हिसाब रे हम माइंड रे रहि जिवो एवं कौन देन हमें पढ़िबा ओके यस पीडीएफ निहाती भाबरे देबी तो जो माने इंटरेस्टेड अछ क्लास कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हे सालानी तो 11th एप्रिल लो स्टार्ट होची क्लास तो जो माने इंटरेस्टेड अछ निहाती भाबरे स्क्रॉल होतवा नंबर रे कॉल करके तम माने बैच परचेस करि परिबो जॉइन हेई परिबो आम सहित जोड़ी हेई परिबो YouTube सहित पेड क्लास रे मध्य आउ जो माने टेस्ट सीरीज दवा को चाहू छ ओडिसा बीएड रो साइंस एंड आर्ट्स टेस्ट सीरीज तम मध्य देई पारिबो एंड एटा हला तुमरो बुक्स जो माने नै कि घरे बसी के एग्जाम सहित बहुत कंफ्यूजन एग्जाम सहित मु केमिति प्रैक्टिस करबी कि एबे तुमको लागुथबो कि कंफ्यूजन भी आसुथबो मते ट्रस्टेबल मैम ना को सर ना आउ को मैम बहुत सारा कंफ्यूजन आसे तम स्टेप रे आमे रहिला बेले भी आमे सेमति करि थाउ कि आमे को जिनसडा को चूज करबा जोटा आम पई ट्रस्टेबल हबा आमे करि परिबा तमे बुक नै कि निजे निजरा प्रैक्टिस मध्य करि पारिबो साइंस एवं आर्ट्स बहुत बुक अछि यूज कोड YT46 ओके यस थ्योरी आनिबा ट्यूसडे काली क्लास हबो नहीं कहीं ना काली मु लीव रे रहिबी काली क्लास हबो नहीं तो हमरो वेडनेसडे हमें थ्योरी आनी के डिस्कशन करबा तो गोटे दिन रे तो थ्योरी डिस्कशन करी हबनी मु बिट बाय बिट करी की डिस्कशन करबी एग्जाम पूर्व सारीबी